Hello students, in this particular video I am going to cover a very key important question or category which comes in different definite integration and जो हम जेई एडवांस में पढ़ाते हैं और जो कि अब जेई मेंस में पूछी जाने लगी है। तो कैटेगरी इज ब्रॉड कैटेगरी और इसमें मैं 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर्स। सो प्लीज टेक योर पेन एंड पेपर एंड अंडरस्टैंड देम। fx लेफ्ट हैंड साइड पे है 0 to x, something is here and fx is here. There is one such pattern which I am going to cover today. Another pattern which you can think of is when there is f dash x on the right hand side. That means integral from 0 to x is here and there is then f dash x. And the third category is when there is 0 say a. You are going from not from 0 to x, but you guys are going from 0 to a and here is something and then there is fx. Right? क्या है क्या नहीं है वो समझेंगे। इसमें आगे बढ़ने से पहले the two-step process is that the first step that you have to do is differentiation. Differentiation using Leibniz rule. Leibniz rule क्या कहता है? 0 से x ft dt का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? If I have to differentiate it with respect to x, what will be the derivative, guys? You guys know that very well. fx. Very clear. Leibniz rule of differentiation. Then intermediate step will be that you will get an equation in terms of f dash and fx, right? Then the second step would be integration. Don't worry, you will not get hold of it अभी एकदम से, but जब आप क्वेश्चंस कर लेंगे तब ये आपको पैटर्न के हिसाब से जो मैं बता रहा हूं, the steps that I am telling you will be very helpful and you will understand them very quickly. इसमें एक बीच में जब इंटीग्रेशन करेंगे then the next process will be find value of c. ठीक है ना? ये steps I am going to make sure that you understand this after today's class. Find value of c. So this is the entire method that we will understand with the help of 3 previous year questions. So this question came in the February attempt of 2021 JEE mains. Let's read the question. It says fx is equal to 0 to x e raised to power t ft plus this. So this actually, if you notice, falls in the first category where fx is on the left hand side. Then you have 0 say x e raised to power t ft dt. अच्छा, इसमें एक चीज और आप नोट करना सब लोग बच्चों, variable of integration. Which is the variable of integration? It is not x, it is t. But if I have to ask you, ये function किसका function है? ये किसका function है? phi t लिखूं और phi x लिखूं इसको? So the correct answer would be phi x. Definite integration always return you the function which the parameter which is lying in the limits. So it will be a function of phi x, or should say x, not t. ठीक है? चलिए, let's come back to the original question. Now you have e raised to power a. So here is something. This is, don't worry about it. You have to find fx, right? So what you will do? We'll just do derivative. पहला approach सीधा लिया और हमने क्या कर दिया? इसको differentiate कर दिया. So differentiation इसकी यहाँ पर बहुत easy थी. You will just replace t by x everywhere. I am assuming that you have done Leibniz rule of differentiation. That's something which you should have done. ये हुआ e raised to power x. अब क्या करें? This becomes a very simple question बच्चों. Why? Because this is e raised to power x common fx plus 1. Now I was telling you that you will do in differentiation. फिर आपको f dash x और fx में कुछ equation मिलेगी and then you come back to integration. So यहाँ पर अगर आप notice करो, integration was very simple. You will have something like this and you have ex on this side, and now what you will do? Just integrate. You will just integrate, and if you notice, the integration is very easy. The derivative of the denominator lies in the numerator, so this will be ln fx plus 1 is equal to e raised to power x plus c. E raised to power x integral is c. Now how do you find value of c? Now that is something which we have to see, that c कैसे निकालें, है ना? c के लिए वापस इस क्वेश्चन पे जाना है. What is the lower limit बच्चों? 0. Now if we go back here, if you put x equal to 0, what will happen? Yes, if you put x equal to 0, the integral will be 0. The integral will become 0. So that is why when you are trying this question, what you will do for c, value of c, you will put x equal to 0. What will be the x equal to 0? You see here, ये क्या हो जाएगा बच्चों? f0. ये पूरा का पूरा बच्चों इंटीग्रल कितना हो गया? 0. f0 comes out to be 1. Go back, put the value of x equal to 0 here, because now you know f0 equal to 1. This is how you solve the process. In the comment box, you will solve the entire question, the 3 questions that I am going to tell you, and you have to go to the last step and write your answer in the comment box, right? So that you can match whether you guys are doing it correct or wrong.
Another method of doing this question was that you can directly integrate from 0 to x. आप इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे सॉल्व कर सकते थे? तो आपको सी में नहीं जाना पड़ेगा. Whenever you don't want to get into C, try to integrate it from 0 to x. That is what you can do when the function is defined at f0. f0 is defined, f0 is coming out to be 1. Right? Understood? First category of question. Next category question. This question came in 2021. You can see July attempt. Right? ये क्या कहता है? f is a function from 3 to 5, twice differentiable, such that fx, आ जाओ fx लिखते हैं. और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है समझने के लिए, बहुत जबरदस्त. अब देखना, I'm very happy to see these kind of questions as a teacher, but at the same time as a student, these questions are very, very difficult and challenging for JEE Mains. JEE Mains में we generally do not expect, but आया है, कर लेते हैं, अच्छा है, क्या होगा, मैथ्स इंप्रूव कर लेंगे. ठीक है, और ये आ गया DT. आगे कुछ नहीं है. आगे क्वेश्चन चल रहा है f-4 is equal to this and then you have to find some alpha plus beta. So that means सबसे पहले तो फंक्शन निकालना पड़ेगा या फिर f-4 डायरेक्ट निकालना पड़ेगा. But we know when something is there where fx is there and then the integral f' is there, we will have to find fx. So fx, then we will differentiate and then we'll put x equal to 4. So this is the mind map that I have made for the question, right? So I will help you figure out fx. Then you have to solve this and let me know in the comment section what is the value of alpha plus beta. Now, first of all, हमने कहा कि सर सबसे पहले क्या कर देना चाहिए, differentiate. Now, another important step. If you notice, there is two functions of x. This is the first function and this is the second function. Can you see that, guys? There are two functions of x. I told you in the beginning, definite integration is a function of its limits. So here the limit is x. So that means the final answer of this particular question, whatever it comes out, it will be a function of x. So that means when you differentiate, you will have to apply product rule. और जब आप product rule लगाएंगे तो एक तो आएगा e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एंड दिस सेकेंड रिपीटेड प्लस आप कहेंगे e की पावर माइनस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस वेयर देयर विल बी नो इंटीग्रेशन. सो व्हाई वी डू डिफरेंशिएशन? द बिग क्वेश्चन इज why we do differentiation at the first step is to remove integration. If I take this particular step at here, I still have my integration. So that means this is not productive because the entire purpose of taking derivative is to remove this integration and form an equation which we can easily solve with f-x and fx. So what we should do, अगर आप यहां पर सोच रहे थे तो that means you guys have got stuck here. How to remove this particular thing then? कैसे बढ़े आगे? अब देखना. So what I did was I took this e raised to power x on this side. So ये कितना बन जाएगा? E raised to power x fx and this entire function. Now if I differentiate this, then integration will be completely removed. So let's say if I differentiate तो क्या बन जाएगा बच्चों? अगर मैं e raised to power x को पहले करूंगा तो e raised to power fx and then second function fx, that will be f-x. Now this will be differentiated only this part, right? So this will be 3x square plus 2x plus 4 times f-x, right? Now, but as compared to the earlier question, you cannot form a very simple integration f-x by fx. वो नहीं बन रहा है यहाँ पर. तो जब इस तरीके के सवाल आ जाए जहाँ एकदम से सिंपल नहीं बन रहा है, तो what you should do is you should put f-x as dy by dx. Obviously, अगर ये पुट करा है तो आप f को क्या पुट करेंगे? y. So if I do that, बच्चों तो ये क्या बनेगा देखो, e raised to power fx will be e raised to power y, e raised to power f-x will be e raised to power dy by dx and dy by dx is here. So अगर मैं इनको इकट्ठा करता तो ये इधर आ जाता. So this would have come out here plus e raised to power x y. बहुत सारे बच्चे, you must have got where I am going towards. मैं कहां लीड करना चाह रहा हूं आपको. So did you see that we guys have actually formed a LDE, linear differential equation? Our target was हमें इंटीग्रेशन करनी है. अब इंटीग्रेशन could be very easy as in the previous question, but here integration is a bit challenging. We have to form a DE. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. तो यहां पर क्या बन गया, dy by dx प्लस आप क्या करते हैं, dy by dx e raised to power x minus 4, right, is equal to 3x square plus 2x e raised to power x minus 4. Now if you notice सर ये तो बहुत अजीब सी कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ पर y भी है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, if.
IF is nothing but e raised to power integral of e raised to power x by coefficient of the middle term. ठीक है, कमाल की बात देख रहे हो यहां पर क्या हुआ है, द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर लाइज इन द न्यूमरेटर. सो ये क्या बन जाएगा, e ln e raised to power x minus 4, which is nothing but e raised to power x minus 4. Again, so many formulas used in a single question. That's the beauty, that's the pattern change that has happened at JEE Mains. तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, y into e raised to power x minus 4 is equal to राइट हैंड साइड पे क्या था हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 2x. और वहां हम सोच रहे थे सर ये कैसा आ रहा था नीचे, याद करो, देखो मैं यहां जब लिख रहा था तो मेरे को यहाँ टेंशन हो रही थी, सर इसको जब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दिस इज एक्सपोनेंशियल, दिस इज पॉलिनोमियल, आइलेट रूल लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा. मजे की बात क्या आई, आप इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करने के लिए, oh this gets cancelled out. So this question is nothing but now you can replace y again with fx. आ गया वापस जो हम fx सॉल्व करना चाह रहे थे. This is now e raised to power x minus 4 is equal to, ये कितना बन गया, x क्यूब प्लस x स्क्वायर. इंटीग्रेट करो, देखो x क्यूब बाय 3 कैंसिल, प्लस यू स्टिल हैव टू सॉल्व फॉर c. अब c के लिए क्या वैल्यू डालें, आ जाओ क्वेश्चन में वापस आओ, लोअर लिमिट पे जाओ. लोअर लिमिट क्या है इस बार, 3. तो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट x इक्वल टू 3. व्हाई वी विल पुट x इक्वल टू 3 फॉर c, बिकॉज at 3 to 3, क्या मतलब what, 3 to 3, you are not integrating anything, area will be 0, so that means this entire integral will become 0 at x equal to 3. So that means if you notice, since it is in multiplication, यहां से पता चल गया कि f3 की वैल्यू क्या है, 0. use it here, x को 3 डालो to find the value of c, you get the value of c, you get the value of fx. The question is still not solved. You have to tell me in the comment box. And this is a previous year JEE mains question, not even advanced. तो छोड़ मत देना, कमेंट बॉक्स में आंसर निकालना है अल्फा प्लस बीटा का. तो अभी आपके पास क्या आएगा बच्चों इस क्वेश्चन में, यू विल गेट fx from here, find c, I am telling you the steps, and then find fx, and then find f dash x, and then find f dash 4. तो अभी क्वेश्चन बहुत लंबा है, बट प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका सबसेट आ सकता है. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. द फंक्शन fx that satisfies fx is equal to x plus this. Now what is the change here? What is the change? Okay, as I write, we will see. Again, by the way, this question came in 2021 September shift. x plus 0 से pi by 2. Did you notice this change? Earlier there was 0 to x. Here there is no 0 to x. इससे क्या डिफरेंस पड़ता है सर, फर्क क्या पड़ता है? The difference comes out that this is a constant function. एक मिनट मैं लिख देता हूं और फिर समझाता हूं तुम्हें. सर नहीं समझ में आया क्या मतलब हुआ, देखो ये हुआ cos y, ये हुआ f y और ये हुआ dy. हमने अभी पिछले क्वेश्चन में करा था, जब मैं तुमसे पूछ रहा था ये फंक्शन जब इंटीग्रेट कर लेंगे, when completely integrated, what is the parameter of the last या फिर फाइनल फंक्शन. आई हैव टोल्ड यू दैट डेफिनेट इज अ फंक्शन ऑफ इट्स लिमिट. तो पहले यहां x होता था तो मैं इसको क्या बोलता था, 5x. बट यहां पर अब की बार क्या है, द लिमिट्स आर बोथ कांस्टेंट. दिस इज एक्चुअली अ कांस्टेंट नंबर. क्यों सर ऐसा कैसे हो जाएगा, आप मान के चलो मुझे कुछ नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको भी लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, sin x बाहर ले लो. क्यों सर sin x बाहर ले लें, dy है ना, what is the variable of integration, y, तो x is constant. So whatever you will get inside बच्चों here, ये जो बन रहा है cos y fy, let's supposedly I get to know what is fy. recursive function है, जबकि यहां पर भी आपके पास fx आ रहा है, ठीक है, घबराना नहीं है, fx यहाँ है. But I know for sure whatever will be the value, you will eventually put higher limit, y को pi by 2 डालोगे तो y गायब हो जाएगा. Then you will put y equal to 0, तब y गायब हो जाएगा. So this actually is a constant function. And if this is a constant function, is it safe for me to assume that if this is constant, let's call it k. So आपके पास यहाँ पर fx क्या बना, fx comes out to be x plus k sin x. This is your function. So ये third category थी, sorry, sin x, where you have to solve like this. Beautiful problem. Believe me guys, I teach this
for my advanced batch. We guys do not teach this for JEE Mains, but JEE Mains have asked this in the previous years. Though these are very difficult questions by any means, but yes. Now, how do we solve this, sir? कैसे solve करें? K की वैल्यू निकाल लिया. पहले हम क्वेश्चन में क्या सॉल्व कर रहे थे? C की वैल्यू. पैरामीटर तो अब यहाँ K हो गया. क्या करोगे? वापस जाओ. अगर मैं देखूं यहां पर क्या करना चाहिए जिससे ये वैल्यू K की निकल के आए हमारे पास. सोचो. Just think a little bit that what we can do to figure out the value of K. K को क्या कर सकते हैं? तो अब ये काम आप लोगों का होमवर्क है. That I have written you the 4 options here. You can see that it is matching to some extent. X आ रहा है, sin X आ रहा है सब जगह. आपको सिर्फ K की वैल्यू पता लगानी है जिससे ये 4 ऑप्शंस आएंगे. Now this is your thought process from your end. How you will find the value of K, and let me know in the comment box the answers to all the 3 problems, not just one problem. I hope by these kind of series you get to know that math सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ने से या सॉल्यूशन पढ़ाने से नहीं होती है. बहुत सारे टीचर्स तक सॉल्यूशन सिर्फ बता के चले जाते हैं. बुक्स में सिर्फ सॉल्यूशंस लिखे होते हैं जो आप ट्रूली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं. थिंक व्हाई दिस इज डन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे मैंने इस क्वेश्चंस की कैटेगरी में आपको बताया, फॉर एग्जांपल व्हाई इंटीग्रेशन वाज इंपॉर्टेंट, व्हाई डिफरेंशिएशन वाज इंपॉर्टेंट, to remove integration. Then only you will be able to think कि ये इसको इधर भेजना है. नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा सर इसको इधर क्यों भेजना है. And that is where you should work hard in terms of improving maths. ठीक है, तो चलिए, I will be waiting for all the 3 answers to these 3 questions in the comment box and let me know what you think of this particular video. God bless. Keep working hard.